अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज हमने पढ़ना है MGT 610 बिजनेस एथिक्स का लेसन नंबर 35, जिसका नाम है दी कॉन्ट्रैक्ट व्यू ऑफ बिजनेस ड्यूटीज टू कंज्यूमर्स। ठीक है, हम जाएंगे वर्ल्ड की फाइल पे और यहाँ से जो है आसान अल्फाज में देखेंगे। फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट व्यू बेसिक्स। कॉन्ट्रैक्ट व्यू के मुताबिक बिजनेस और कंज्यूमर का रिलेशन बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। जब कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट खरीदता है वो अपनी मर्ज़ी से सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करता है और बिजनेस एग्री करता है कि प्रोडक्ट की सर्टेन क्वालिटीज़ प्रोवाइड करेगा। ठीक है। कंज्यूमर राइट्स। अगर कंज्यूमर ने पैसा दिया और बिजनेस ने प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ प्रॉमिस की तो बिजनेस का ड्यूटी है कि वो अपना प्रॉमिस वो अपने प्रॉमिस को पूरा करे और कंज्यूमर का राइट है कि उसको वैसा प्रोडक्ट मिले जो प्रॉमिस हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आज द जस्टिफिकेशन कांट एंड राल्स। कांट क्या कहते हैं? अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स फॉलो नहीं किए तो वो यूनिवर्सलाइज नहीं किया जा सकता और दूसरे को सिर्फ मीन्स ट्रीट करना है, यानी कि रॉन्ग। ठीक है। अगर लोग कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स पर रिलाई कर सकते हैं तो उनकी फ्रीडम बढ़ जाती है और ट्रस्ट क्रिएट होता है। नेक्स्ट आज द सेकेंडरी मॉरल कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ एक्स्ट्रा रूल्स भी हैं, यानी कि फर्स्ट के दोनों पार्टीज़ को एग्री का फुल नॉलेज होना चाहिए। कोई भी पार्टी फैक्ट्स को इंटेंशनली मिस रिप्रेजेंट ना करे। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेस या अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर ना हो। मेन ड्यूटीज़ ऑफ बिजनेस, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट व्यू ड्यूटी टू कंप्लाई, जो प्रोमिस दिए वो फुलफिल करना। एग्जाम्पल क्या है? विंथरोप लेबोरेटरीज ने ड्रग के नॉन एडिक्टिव कहा लेकिन वो एडिक्टिव निकला, यानी कि लेबल हुआ। ड्यूटी नॉट टू मिस रिप्रेजेंट, यानी कि फॉल्स क्लेम या मिसलीडिंग इन्फो देना गलत है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूटी नॉट टू कोएस, यानी कि बायर्स की इमोशनल स्टेट या इग्नोरेंस का फ़ायदा उठाना गलत है। प्रॉब्लम्स क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। नॉर्मली मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंज्यूमर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, होलसेलर्स और रिटेलर्स के थ्रू प्रोडक्ट जाता है। कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर इक्वल नहीं होते, सेलर ज़्यादा स्किल्ड होता है। बायर को हर प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए। अगर कंज्यूमर फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो प्रोडक्ट विदाउट क्वालिटी भी खरीद सकता है, यानी कि थ्योरी अनरियलिस्टिक। नेक्स्ट आगे इसके एमसीक्यूज हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट व्यू द रिलेशनशिप between a business and its consumer is like what? A contractual relationship. What duty does a business have when a consumer buys a product under the contract view to provide a product with the characteristics promised? According to Kant, why must contract terms be followed? Because failing to do so cannot be universalized and treats the other person as a means, not an end. According to Rawls, why is enforcing contracts important? It provides assurance that contracts will be kept and expands freedom. Name one secondary moral constraint in contracts. Both parties must have full knowledge of the agreement. What is another secondary constraint regarding contracts? Neither party must intentionally misrepresent facts. What is the third secondary constraint in contracts? Contracts must be entered without duress or undue influence. What does the duty to comply mean in the contract view? Fulfilling the promises made about the product. What is an example of failing the duty to comply? With the laboratories marketed a drug as non-addictive but it caused addiction. What does the duty not to misrepresent require? Not to intentionally deceive the buyer about the product. Example of misrepresentation: selling a used model as new as displaying it with new models to deceive. What does the duty not to coerce mean? Not taking advantage of the bias, fear, ignorance, or emotional stress. Why is the contract theory criticized regarding manufacturers consumer relations? Because manufacturers normally do not deal directly with the consumers. What is another criticism of the contract theory regarding equality? Buyers and sellers are not equally skilled, sellers have more knowledge. What is the assumption that contracts are freely entered considered unrealistic because consumers may not fully understand the product or be pressured indirectly? What is the potential problem if a contract allows a
consumer to agree to a product without quality. It may release the manufacturer from responsibility, making the theory unrealistic. What is seller knowledge ever stronger than buyer knowledge? Sellers know their own products while buyers need to know about all products they purchase. जी तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 35 एंड होता है। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।